हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो बच्चों, क्या आपको याद है दैट यू हैव लर्न सो मेनी डिफरेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एंड दैट टू इन डिटेल. So we have learnt in our previous classes about one of the concepts of grammar. Now we are going to enhance it further and learn that concept in detail. It is called the concept of active and passive voice. That's the name of our chapter. So bachcho, let's see what is active and passive voice. Hello kids, voice is that form of a verb which shows whether the subject is the active doer of the action or the action is done to the subject. चलो, a transitive verb has two voices. जो transitive verb होता है उसके दो voices होते हैं. एक होता है active voice और दूसरा होता है passive voice. Okay, so बच्चों, let's start with the active voice. Active voice क्या होता है? A verb is in the active voice when its subject is an active doer. जब subject कोई active action कर रहा है, okay, is actively doing some action, okay, that means that that verb is in the active voice. Okay, in other words, an active voice expresses an action performed by the subject. Okay, for example, okay, a boy stole her book. तो बच्चों, आपको transitive क्या है वो याद है ना? Transitive means you have to have an object that follows the verb. Okay, और intransitive में object नहीं होता है. जैसे a boy stole her book, यहाँ पे book क्या हो गई? Object है. Okay, so active voice में है, हम बता रहे कि a boy stole her book. Okay, तो actively हुआ है वो. Her book was stolen by a boy. Okay, तो जब हम बोल रहे कि उसकी बुक चोरी हो गई थी, किसी लड़के ने उसकी बुक चोरी की थी, तो हम उसको अलग तरीके से जब बोलते हैं तो वो होता है her book was stolen by a boy. Okay, now this is a passive. यहाँ पे आप देखोगे passive में क्या हुआ है, जो subject है, okay, वो बन गया है object, और जो object है वो बन गया है subject in passive voice. Okay, now both the sentences given above have the same meaning, but note the difference. In sentence 1, the subject, a boy, is the doer of the action, so the subject is active. Okay, the verb stole is therefore in the active voice. So उस लड़के ने बुक चोरी की है, so that boy, okay, is the doer of the action. Okay, now second is passive voice. A verb is in the passive voice when the action is not done but received by the subject. Okay, in other words, a passive voice expresses an action performed upon the subject. जो subject पे action हुई है उसके बारे में बात करते हैं passive voices. Okay, so in sentence 2, the subject, her book, is the receiver of the action, and this subject is not active but passive. Okay, book है जिसके ऊपर action हो गई है, okay, वो बन जाता है passive. Alright, the verb was stolen is therefore in the passive voice. Alright, now remember, passive voice can be performed only from transitive verbs. अगर transitive verbs है तो ही passive voice use हो सकता है, because आप देखोगे इसमें जो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, object जो है वो subject बन जाता है. ओके, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है. इसके लिए दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली इफ इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? चलो, नाउ द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. Subject is shifted in place of the object as by plus hn. Okay, verbs are changed into perfect tense or past participle form, and the sentences take the form be plus past participle. The verb changes in number according to the new subject. Okay, चलो अब देखते हैं table so that we understand this better. Read the table to learn tense structure in passive voice. Notice the changes in singular and plural number. Okay, अगर वो simple present में है,
ओके, एक्टिव बन जाएगा उसका वर्ब प्लस एस या ई एस, एंड पैसिव बनेगा इज, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ओके, सो अफर्मेटिव, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रवि राइट्स अ पोएम, और इसी को हम पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? अ पोएम इज रिटन बाय रवि. अब नेगेटिव सेंटेंस होगा, सपोज रवि डज नॉट राइट पोएम्स, तो इसका पैसिव बनेगा पोएम्स आर नॉट रिटन बाय रवि. इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब सवाल, डज रवि राइट पोएम्स? आर पोएम्स रिटन बाय रवि? ओके, ये पैसिव वॉइस हो गया. नाउ अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो अफर्मेटिव, रवि रोट अ पोएम, एंड पैसिव बन जाएगा अ पोएम वॉज रिटन बाय रवि. नेगेटिव, रवि डिड नॉट राइट पोएम्स, पोएम्स वर नॉट रिटन बाय रवि. इंटरोगेटिव, डिड रवि राइट अ पोएम? वॉज अ पोएम रिटन बाय रवि? ओके, अब सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे. अफर्मेटिव में आएगा रवि विल राइट अ पोएम. ओके, पैसिव में आएगा अ पोएम विल बी रिटन बाय रवि. ओके, नेगेटिव, रवि विल नॉट राइट अ पोएम, और इसका पैसिव बन जाएगा अ पोएम विल नॉट बी रिटन बाय रवि. इंटरोगेटिव, विल रवि राइट पोएम्स? विल पोएम्स बी रिटन बाय रवि? देखो अलग अलग तरीके हैं. फ्यूचर आपको तो फ्यूचर टेंस याद है, पास्ट टेंस याद है, प्रेजेंट टेंस याद है ना, तो ऐसे ही हम इसको उनके हिसाब से वी विल चेंज द एक्टिव एंड द पैसिव वॉइस. नाउ लेट्स लुक एट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ओके, यहाँ पे अफर्मेटिव में आएगा रवि इज राइटिंग अ पोएम. ओके, तो उसकी एक्शन हो रही है कंटिन्यूअसली इन द प्रेजेंट टेंस. ओके, अ पोएम इज बीइंग रिटन बाय रवि. Okay, now let's look at the negative. Ravi is not writing poems. Poems are not being written by Ravi. Interrogative. Is Ravi writing a poem? Is a poem being written by Ravi? Dekha difference? Now, let's look at the past continuous. Okay? Affirmative. Ravi was writing a poem. Or passive hoga, a poem was being written by Ravi. Negative, Ravi was not writing poems. Poems were not being written by Ravi. Interrogative, was Ravi writing a poem? Was a poem being written by Ravi? Okay, अब देखते हैं present perfect. Okay, affirmative, क्या आएगा बच्चों? सोचो, Ravi has written a poem. और इसका passive आएगा a poem has been written by Ravi. Negative, Ravi has not written a poem. और passive होगा a poem has not been written by Ravi. Interrogative, has Ravi written a poem? Has a poem been written by Ravi? Okay, अब आएगा past perfect. Affirmative, Ravi had written a poem. A poem had been written by Ravi. Negative, Ravi hadn't written a poem. A poem had not been written by Ravi. Interrogative, had Ravi written a poem? Had a poem been written by Ravi? Okay, चलो अब देखते हैं future perfect. Affirmative, Ravi will have written a poem. A poem will have been written by Ravi. Negative, Ravi will not have written a poem. A poem will not have been written by Ravi. Interrogative, will Ravi have written a poem? Will a poem have been written by Ravi? So बच्चों, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, अलग अलग तरीके हैं लिखने के, एंड यू हैव टू रिमेंबर देम ऑल. तो जब भी आप ये चैप्टर रीड करोगे, अच्छे से रीड करना और रिवाइज करके रखना, बिकॉज देन दैट विल हेल्प यू व्हेन यू आर डूइंग योर एक्सरसाइजेस. ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स लुक एट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, future continuous and future perfect continuous. Okay, all these things, if you look at them clearly, what we have done already, okay, they do not have a passive form. इनके passive forms नहीं होते. तो to change passive voice into active voice, we reverse the rules given for active to passive.
तो जो रूल्स होते हैं ना एक्टिव टू पैसिव वाले, वो चेंज हो जाते हैं इन सब के लिए. ओके, सो हियर आर सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. चलो देखते हैं क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट इज चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इनटू द ऑब्जेक्ट. ये फर्स्ट रूल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल भूवी बाइज अ बुक, तो एक्टिव हो गया ये, राइट. अब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में. अ बुक इज बॉट बाय भूवी, हमने सब्जेक्ट को इंटरचेंज किया ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ. क्लियर, वेरी इजी. Okay, next is use the past participle form of the verb with suitable be verb. For example, Bhuvi buys a book. Okay, active tense में हो गया. A book is bought by Bhuvi. ये बन गया passive. Clear? अब Bhuvi bought a book हो गया active में, तो इसको passive में change करेंगे. A book was bought by Bhuvi. Okay, क्योंकि buys तो present में आ गया ना, एक्टिव में है. बाइज अ बुक, वैसे बॉट में हम पास्ट की बात करें, सो बॉट अ बुक. ओके, तो उसको हम पास्ट के हिसाब से चेंज करेंगे इनटू पैसिव. नाउ भूवी इज बाइंग अ बुक, मतलब ये फ्यूचर के हिसाब से बात करें इन एक्टिव, तो इसका आएगा अ बुक इज बीइंग बॉट बाय भूवी. ओके, अब एड द प्रीपोजिशन बाय बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट. अब नया ऑब्जेक्ट जो होगा उसके साथ हम जोड़ेंगे by. Okay, for example, Monu has bought this chair. Okay, ये active हो गया. This chair has been bought by Monu. तो हमने ये नया जो ऑब्जेक्ट हुआ है, पहले तो आप देखोगे Monu is the subject and chair is the object. अब जब हम उसको पैसिव में करेंगे तो चेयर बन जाएगा सब्जेक्ट और मोनू बन जाएगा नया ऑब्जेक्ट. इसके लिए हम उसके पहले ऐड करेंगे by. Okay, the subject pronoun changes to object pronoun and vice versa. Like, I gave him this book. This book was given to him by me. Okay, ये हो गया passive voice. She called me on phone. This is the active one. अब इसका passive हो जाएगा I was called by her on phone. They will gift her a camera on her birthday. Okay, अब इसको हम पैसिव में करेंगे शी विल बी गिफ्टेड अ कैमरा बाय देम ऑन हर बर्थडे. ओके, और अ कैमरा विल बी गिफ्टेड टू हर ऑन हर बर्थडे बाय देम. ओके, नाउ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ प्रोनाउंस चेंज व्हेन वी चेंज एक्टिव टू पैसिव. अब एक्टिव टू पैसिव करते हैं तब हमारे जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते वो कैसे चेंज हो जाते हैं. लेट्स लुक एट देम. सो subject pronoun in active voice अगर I है तो subject pronoun in passive voice will become me. If it is we, it will change to us. If it is you, it stays as you. If it is he, it changes to him. If it is she, it changes to her. If it is they, it changes to them. And if it is it stays as it. Okay? Now, when a preposition follows a verb in the active voice, it stays the same in the passive voice. Okay, for example, Ravi takes care of his brother. अब ये active में है और यहाँ पे preposition है of. His brother is taken care of by Ravi. तो आपने देखा यहाँ पे when a preposition follows a verb, okay, his को when it is following a verb, जैसे takes care of, okay, in the active voice, it stays the same in the passive voice. Same रह जाता है passive voice में, taken care of. Clear? चलो. When the subject of the verb is not important in the passive voice, it can be omitted. अगर okay, verb का जो subject है वो passive voice में उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको omit कर सकते हैं. Okay, for example, someone has stolen my pen. Okay, if it is in the active voice and passive voice में आप लिखोगे a pen has been stolen. Okay, आपको ज़रूरी नहीं है mention करना by someone. Okay, you can just drop it. Okay, a question when changed to passive voice retains its form, only the form of the verb, and the pronouns change. For example, when did they invite you?
ये एक्टिव वॉइस में हो गया. अब पैसिव में हो जाएगा व्हेन वर यू इनवाइटेड बाय देम. ओके, ठीक है. तो इसमें आप देखोगे कि पैसिव वॉइस का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो हमने रिटेन किया है. ऑलराइट, सो सिर्फ हमने वर्ब को चेंज किया है एंड द प्रोनाउंस को चेंज किया है. व्हेन डिड दे इनवाइट यू, तो व्हेन वर यू इनवाइटेड बाय देम. ऑलराइट, is he disturbing you? Are you being disturbed by him? Why did the teacher scold you? Why were you scolded by the teacher? Who played the piano? By whom was the piano played? Who is painting that picture? By whom is that picture being painted? Okay, चलो अब स्मार्ट बनते हैं. And how do we get smarter? We get smarter by doing the exercises. But बच्चों आपको याद है ना क्या करना है before you do the exercises? You have to reread the chapter अच्छे से. Okay, I'm saying this again and again because that is something which is like it should be a hard and fast rule कि हमें जब भी exercises करने हैं उसके पहले chapter read करना है. Change the following sentences into passive voice. Okay, many meaningful films have been directed by good directors. Okay, तो इसको हम change करेंगे into passive voice. Many meaningful films have been directed by good directors. So, good directors have directed many meaningful films. Okay, चलो. Supriya made dosas and idlis. Dosas and idlis were made by Supriya. Okay, चलो ऐसे ही आगे वाले sentences आपको खुद से करने हैं. Now, next one is change these sentences from active to passive voice. If the verb is intransitive, write it cannot be changed. अगर verb intransitive है तो आपको लिखना है कि it cannot be changed. Okay, are you taking the dog for a walk? Is the dog being taken for a walk by you? Okay, why did they catch the birds? Okay, why were the birds caught by them? Clear? चलो अब अगर आप देखोगे कि इसमें आपको कोई सब्जेक्ट नहीं है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यू डोंट हैव टू, when there is no object, okay, you can leave it as is, but you have to attempt these other ones. Okay, clear? चलो change the following sentences from active to passive voice. One has been done for you. Someone pushed me in the bus. I was pushed in the bus. Okay, someone has changed the design. The design has been changed. Okay, तो यहाँ पे आपको फिर से someone बोलने की ज़रूरत नहीं है. The design has been changed. Okay, the police arrested the kidnappers. The kidnappers have been arrested by the police. Okay, चलो अब next one. Change the following sentences from passive to active voice. Okay, the thief was chased by the residents. The residents chased the thief. I was given a lift at 5 in the morning. Okay, at 5 in the morning, I was given a lift. Okay, their car has been serviced. Servicing has been done on their car. Clear? चलो ऐसे आपको बाकी सब अपने आप करने हैं. And I'm sure children you can all do it. So get going.